Assalamu alaikum. Today we are here with lecture number 2 of your chapter, The Nervous System. I am Ms. Afifa. In our previous lecture, I have told you that I will be telling you detailed functioning of the brain and the parts of the brain. So let's start with its parts. In this lecture, we'll only discuss what parts are present in the brain. Okay? Generally, our brain consists of three parts. Number 1, cerebrum. Number 2, cerebellum. And number 3 is medulla oblongata. अब जो हमारा पार्ट cerebrum होता है, it is divided into two hemispheres. One is on right side and the other is on left side, as you can see here. ठीक है जी. Now let's move towards the functions of cerebrum. Cerebrum has 4 loops. पहला loop frontal loop, second parietal loop, occipital loop, temporal loop. ठीक है. Generally the functions of cerebrum are listening, hearing, touching, remembering, sense organs, remembering, creativity, thinking skills. ठीक है. तो ये सारी जो हमारी skills हैं, they comes up with cerebrum. ठीक है. Now in detail, what is the function of frontal loop? Frontal loop controls voluntary motor functions, यानी all the voluntary actions are controlled by frontal loop. Motivation, foresight, planning, if you are motivated to something, कि I can do it, मैंने ये काम करना है, ठीक है. Foresight, you know before doing the work. Planning, memory, moods, emotions, social judgment, aggression. These all are the parts of frontal loop, functions of frontal loop. Parietal loop. Parietal loop receives and integrates general sensory information, taste, some visual processing. Yani your sense organs, 2 sense organs are included in parietal loop. जो आपके taste organs हैं और जो आपकी visual processing है, जो आप देख रहे हो, taste buds, tasting sense and visualization sense, that is your eyesight. ये दो senses function in parietal loop. Occipital loop goes with primary visual center of brain. यानी if you are thinking about something, आप किसी चीज़ को सोच रहे हो, आप उस चीज़ को किस तरह से विजुअलाइज कर रहे हो, आपने एक चीज़ देखी है, now you are thinking about it and now you are visualizing and analyzing it. तो विजुअलाइजिंग एनालाइजिंग का जो प्रोसेस होता है, यानी ओवरऑल हेयर वी विल टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल स्किल्स. ठीक है जी. टेम्पोरल लूप. टेम्पोरल लूप के अंदर हम बात करेंगे एरियाज फॉर हेयरिंग, स्मेलिंग, लर्निंग, मेमोरी एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ विजन एंड इमोशन. हमने पेरिटल लूप में 2 सेंसरी ऑर्गन्स डिस्कस किए थे, दैट इज टेस्ट एंड सम विजुअल प्रोसेसिंग. ठीक है. टेम्पोरल लूप में हम थर्ड हियरिंग सेंस, स्मेलिंग सेंस, लर्निंग मेमोरी यूज़ करेंगे. यानी जो भी आप देखते हो, इट योर ब्रेन रिमेंबर्स इट, it remains copied in your mind. ठीक है जी. Now the last function is insula, understanding spoken language, taste and sensory information from visceral receptors. यानी आपकी बॉडी के जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनसे रिसेप्टर्स रिसीव करना, कि व्हाट इज सेंस रिसेप्टर्स रिसीव करना, कि आपके सेंसरी ऑर्गन्स को क्या स्टिम्युलस मिला, ये रिसीव करना सेरेब्रम का फंक्शन है. Coming towards the second part of your brain, that is the major second part, that is cerebellum. Cerebellum homeostasis maintain करता है, आपकी बॉडी का बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है. In your upcoming classes we will study a chapter homeostasis, that is coordination and movement. आपकी बॉडी का एक पार्ट के दूसरे पार्ट से कोऑर्डिनेशन, आपकी बॉडी की प्रोग्रामिंग, आपकी बॉडी की टाइमिंग स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, ये हमारा cerebellum डील करता है. Last is medulla oblongata. Medulla oblongata is found in the lower section of your body and it is found on the top of the spinal cord. ये automatic functions deal करता है, which naturally, all those functions which naturally occur in your body, including digestion, respiration, which only stops due to certain kind of malfunctioning. Otherwise, they occur naturally in your body. Digestion of your body never stops, respiration never stops, your heart rate never stops, heartbeat never stops.
unless there is certain issue. अगर कोई issue आ जाता है then these processes stops, otherwise they keep on going in a natural way. तो all these processes are due to medulla oblongata. ठीक है, hope you have got all the things in this video and we'll soon meet